Alright, so let's begin with today's topic. Now we are seeing the topic on complex function. Till now we have seen the definition of what is called as analytic function, and we have seen two types of problems based on this. Type 1 problem was where we were given a function f of z, and we were asked to show that the function is analytic. And type 2 function was where type 2 problem was where we were given a function, we were told that the function is analytic, and we had to find out the values of certain unknown constants a b c d lm p k present in the function. So these are the first two types of problems that we have seen. Today we'll be seeing the third type of problem. Now, before seeing the third type of problem, there is one concept that we need to understand. Okay, so let us see what that is. Now, this is a term which is called as analytic function. We have harmonic function. We have seen what is an analytic function. Now we are going to see one more type of function, and that is harmonic function. Okay, let us see the definition. A real function phi in x and y is said to be harmonic if it satisfies Laplace equation, and Laplace equation is second order partial derivative of phi with respect to x plus second order partial derivative of phi with respect to y is equal to 0. This is Laplace equation. So if the function phi satisfies Laplace equation, then it is said to be harmonic. Now here the keywords are the given function phi has to be a real function. Okay, now we are in the topic of complex function, but this function phi has to be a real function. Then this function is said to be harmonic. So again, comparing the two types of function, analytic function was defined for a complex function, a function which has a real part and an imaginary part. Now we are seeing the second term, and that is harmonic function. Harmonic function is defined for a real function. So this is the first point of distinction we can see, correct? No? Analytic function we defined for a complex function. Okay, if you want to talk about analytic function, the function has to be complex function. Here harmonic function, if we want to talk about harmonic function, we can do so only for a real function. This is not applicable for complex function. Okay, all right. Now this was Laplace equation in the Cartesian form. You can see the variables x and y. Now we know that we are dealing with both the forms, Cartesian as well as polar. So let us see the definition of harmonic function if the function is in the polar form. A real function phi, r and theta is said to be harmonic if it satisfies Laplace equation. Now Laplace equation in the polar form is phi r r, that is second order partial derivative of phi with respect to r, plus phi r, that is first order partial derivative of phi with respect to r upon r, plus phi theta theta, so that is second order partial derivative of phi with respect to theta upon r square equal to 0. Okay, so in Cartesian form it's very simple, second order with respect to x plus second order derivative with respect to y, and we add, the answer has to be 0. In the polar form the Laplace equation is slightly different. Second order partial derivative of phi with respect to r plus first order partial derivative of phi with respect to r upon r plus second order partial derivative of phi with respect to theta upon r square equal to 0. Okay, so if these Laplace equation are satisfied, then the function is said to be harmonic. The function has to be a real function. It has to satisfy only one condition, and that is Laplace equation. And if this happens, then the function is said to be harmonic. Okay, now we are in the chapter of complex function, and we have defined the term harmonic function which is applicable for a real function. This is a bit confusing, isn't it? बात तो हम कर रहे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की. अब इसमें हमने ये जो टर्म है डिफाइन किया है रियल फंक्शन के लिए,
So how is this relevant? Okay, so for that let us see the relation between analytic function and harmonic function. इससे पहले का जो टर्म था एनालिटिक फंक्शन, वो तो हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए डिफाइन किया था. ओके, सो ये एनालिटिक फंक्शन और ये हार्मोनिक फंक्शन ये किस तरह से रिलेटेड है ये हम देखेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड कि why we are talking about harmonic function which is actually defined for a real function. Okay, all right, before going to this relation, we are talking about complex function. Okay, and as I said, this term is for a real function. Is there any relation between complex function and real function? अगर ये relation आपके पकड़ में आ गया, then you will understand the relation between analytic function and harmonic function as well. What is a complex function? Complex function is f of z equal to u plus iv. This is a complex function. Is there any relation between a complex function and a real function? Hello. Is there any relation? Very good, Jeet. The real part of a complex function. What is the real part of a complex function? It is a real function. Because when you look at the real part, it doesn't only the real part. When I say only the real part means we are looking at the function u. So when you look at the function u, it is a real function. So that is one relation we got. The real part of a complex function is a real function. Anything else? What about the imaginary part? What about the imaginary part? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है u प्लस आई वी, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? iv is the imaginary part. Yeah, Kunal is saying v is the imaginary part. Jeet is saying I is the imaginary part. In real function, I term is multiplied by 0. Amit, u plus 0v, you are talking about a real function. I am talking about a complex function, u plus iv. u plus iv का real part u है. Okay, is this u a real function? u plus iv is the complex function. इसका real part है u. This u, is this a real function? Yes. Okay. What about the imaginary part? अभी इसका imaginary part क्या है? Three options you have got. The imaginary part is v, the imaginary part is I, the imaginary part is iv. तीनों में से कौन सा करेक्ट है? u plus iv is the complex function. इसका imaginary part क्या है? Is the imaginary part v? Is the imaginary part I? Is the imaginary part iv? Omkar says v. Anupam also says v. Ritesh says v. Kunal says v. Amit is maybe v. Jeet says I. Shubham says v. Chirag says v. Utkarsha v. Okay. So we have got a majority over here and that is the correct answer. The imaginary part. P-A-R-T. Part. The imaginary part is v. Now Jeet, what is I? I क्या है?
एनीवन कैन आंसर. जीत ने आई बोला है. -1 का रूट है. आई एम कॉलिंग यू, आई एम आस्किंग यू फॉर द नेम. I, no, I is a complex function, right? I is not the imaginary part. I is the imaginary unit. समझ में आया? I जो है वो imaginary, I defines an imaginary part. I is used to define an imaginary part, but I is not the imaginary part. उसके आसपास का सब बता रहे हो, बट आई क्या है? अगर आपका फंक्शन see we are talking in relation to the complex function u plus iv. see I am typing in the chat box now. ये u plus iv अपना complex function है. इसमें u क्या हुआ? रियल पार्ट है. ये फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका टर्मिनोलॉजी देखा था. u इज द रियल पार्ट. अभी हमने देखा है कि v इज इमेजिनरी पार्ट. ओके, I is imaginary unit and IV is imaginary number. तीनों में फर्क समझा? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यूनिट एंड इमेजिनरी नंबर, तीनों अलग अलग चीजें हैं. मैंने आपको क्या पूछा था? इमेजिनरी पार्ट पूछा था या इमेजिनरी यूनिट पूछा था या इमेजिनरी नंबर पूछा था? इमेजिनरी पार्ट पूछा था. तो इमेजिनरी पार्ट पूछा था, तो व्हाट वुड बी द आंसर? V, correct. Now V is the imaginary part of our complex number or complex function f of z. Now this V, is it a real function or a complex function? The real part, is it a complex function or a real function? It's a real function. Did we understand it? Yes. So what we see here is f of z is a complex function. उसका real part, that is u, is a real function. उसका imaginary part, that is v, is a real function. तो complex function में ही दो real function present है. तो इस तरह से complex और real function relate होते हैं. Do you see this relation? एक complex function को ले लो तो उसी में दो real function present है. एक है उसका real part, दूसरा है उसका इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन ऑलरेडी रिलेटेड है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन. अगर अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z अगर एनालिटिक है, इफ आर फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक, देन वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इट्स रियल पार्ट u. Now real part बोला तो ये तो real function हुआ. That is harmonic. Okay. There is one more property which says that if your function f of z is analytic, then its imaginary part. When I say imaginary part, I am talking only about v. V is a real function, right? That is also harmonic. So here we are having two very nice properties. The first property is, if you have an analytic function f of z, its real part is harmonic. And the second property is, if you have an analytic function f of z, its imaginary part is harmonic. Now, did you understand what is the relation between analytic function and harmonic function? Okay. Now there is one more term that we will introduce.
harmonic conjugate. Now what is harmonic conjugate? Now here, if u and v are the real and imaginary part of the same analytic function, then u is said to be a harmonic conjugate of v and v is said to be a harmonic conjugate of u. Okay? Acha, for example, let me give you an example. Now we have got second year comms A. Any student, who all are the students in SC, any student from SC comms A division? A division में से कोई भी दो नाम बताओ मुझे. A division में से कोई भी दो नाम बताना. Any two of you from A division, your name please. Jeet is from A division. One more name please. A division. Okay. Kushal. Aman is giving Om ka naam. Okay. Kushal is from A division. So we have got two people here from A division, Jeet and Kushal. Can you give me two names from B division? Division B. शुभम. दो दो शुभम नहीं चाहिए, एक और दूसरा नाम बताओ. आई हैव गॉट टू शुभम फ्रॉम बी डिवीजन. For my example, I need to use two different names. So one I will use Shubham and one more name from B division. Okay. Ashish is giving Prakash ka naam. Okay, Prakash. So we have, see, Jeet and Kushal is from A division. Shubham and Prakash are from B division. Now, can I say Jeet and Kushal are classmates? Yes or no? Can I say Jeet and Kushal are classmates? Yes. Can I say Shubham and Prakash are classmates? Yes. Can I say Jeet and Prakash are classmates? No. Because they are from different division. Okay. So, U is said to be a harmonic conjugate of V. ये इसका this particular statement gives you a lot of information. If U is said to be the harmonic conjugate of V, it means U and V both are harmonic and both of them are real and imaginary part of the same analytic function. Conjugate का मतलब है like we say mate, classmate, वैसा conjugate है. Conjugate means both of them belong to the same analytic function. They are harmonic and conjugate means they belong to the same harmonic function. Same analytic function. V is harmonic conjugate of U. That means V is harmonic and V belongs to the same analytic function to which U belongs. Okay. So U and V cannot be the real and imaginary part of two different analytic function. Conjugate का मतलब है they have to come from the same analytic function. So did we understand the relation between analytic function and harmonic function? And did we understand the terminology harmonic conjugate? If some concept is not clear to someone, please ask me. Because you're giving me just yes, no, so I don't know the yes is for which question and the no is for which question. Understood. Okay. Anyone who has not understood can please type not understood. Okay, Shubham, what have you not understood? Unmute yourself, please.
Shubham, you have to ask me the doubt. Utkarsha, explain that relation again. Okay. Shubham, you figure out how to ask me the doubt. Till then, I will be answering Utkarsha's doubt. The relation between analytic function and harmonic function, right? Okay. Now, analytic function is defined for a complex function. Analytic function मतलब क्या? Cauchy-Riemann equation satisfy होना चाहिए and all the partial derivatives should be continuous. किसका partial derivatives? Real and imaginary part का. कौन सा real and imaginary part? Complex function f of z का. So ये जो analytic function है, ये किसके लिए defined है? ये complex function के लिए defined है. Harmonic function. See, here is the relation. Here is the definition of harmonic function. Harmonic function किसके लिए defined है? Real function के लिए. Okay, तो ये definitions तो clear है. अब हमें समझना है कि दोनों में relation क्या है. उसके लिए हमें एक complex function f of z लेना है. So we take the complex function f of z. So if f of z का एक real part होगा u और उसका एक imaginary part होगा v. Okay, so f of z is u plus iv. So relation ये है कि अगर अपना पूरा फंक्शन जो है f of z, ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका अगर आपने सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर किया तो वो हार्मोनिक होगा. मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक है, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ux will be equal to vy and uy will be equal to minus vx. ये सेटिस्फाई करता है. ux, uy, vx, vy would be continuous. ये सेटिस्फाई करता है. तो f of z is analytic, मतलब ये पूरा फंक्शन मिलके ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते. ओके, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसका जो रियल पार्ट है u वो हार्मोनिक है. इसका क्या मतलब हुआ? अगर f of z एनालिटिक है उसका मतलब देख लिया. अब u हार्मोनिक है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन u है ये लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मतलब u xx, या फाई के जगह पे u डालना है. u xx प्लस u yy विल बी 0. फिलहाल मैं सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म का एग्जांपल ले रही हूँ. सेम कैन बी सेड फॉर द पोलर फॉर्म. तो u xx प्लस u yy विल बी 0. So that means u will be harmonic. Okay, function analytic है तो उसका जो रियल पार्ट है u वो हार्मोनिक है. ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 1 है. फंक्शन एनालिटिक है तो इसका इमेजिनरी पार्ट v जो है वो हार्मोनिक है. v हार्मोनिक है उसका क्या मतलब है? उत्कर्षा, यू कैन आंसर. v हार्मोनिक है उसका क्या मतलब है? No, it satisfies CR equations. No, v is also a real part. No, v is harmonic doesn't mean v has to be a real part. What is the meaning of v is harmonic? स्लाइड में लेफ्ट साइड में ही अवेलेबल है उसका आंसर. यस जीत. फाई एक्स एक्स प्लस फाई वाई वाई इक्वल टू 0. जीत, रॉन्ग आंसर. Amit Pal, it satisfies harmonic conditions. What is harmonic condition? Pradnya, it satisfies vxx plus vyy equal to 0. Very good. Pradnya is 100% correct. Ankit, v satisfies Laplace equation. Correct. Shubham, it satisfies the Laplace equation, so it's harmonic. So it's harmonic nahi. It is harmonic. It satisfies Laplace equation. Correct. Prashant, it satisfies Laplace equation. Correct. क्या है Laplace equation satisfy कर रहा है? उसका क्या मतलब है? As Pradnya has already said, it means vxx plus vyy is equal to 0. Okay.
मतलब अगर अपना ये जो पूरा फंक्शन है ये एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड जो है ये एनालिटिक है, तो उसका रियल पार्ट हार्मोनिक है। मतलब पूरा फंक्शन ने कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई किया, तो उसका रियल पार्ट ने लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, देन वी इज हार्मोनिक। इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ जेड ने कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई किया, मतलब वी ने हार्मोनिक ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया। दिस इज द रिलेशन। समझ में आया? Okay, you have Utkarsha says understood now. Okay, Utkarsha, I have got a question for you. I give you a function f of z. Okay, f of z equal to u plus iv. ठीक है? 1 minute. I am typing my question in the chat box, so all of you can see that. तो f of z equal to u plus iv है, तो मेरा क्वेश्चन है, if f of z is analytic, does that imply that u is harmonic? Utkarsha, question is for you. If f of z is analytic, does that imply u is harmonic? Prashant says yes. The two people who have asked the doubt on this, Utkarsha and Shubham. Utkarsha says yes, Shubham says yes, Dheeraj says yes. Very good. Okay. Now my second question. If f of z is analytic, does that imply v is harmonic? If f of z is analytic, does that imply v is harmonic? Yes, all of you, very good. Now my next question. If u is harmonic, does it imply f of z is analytic? If u is harmonic, does it imply f of z is analytic? No, no. उसके बारे में हमने बात ही नहीं किया है. That is the converse, and all of you have given the correct answer except Prashant. Prashant ने yes कहा है. Prashant, the answer is no. Okay. F of z analytic है, it implies u is harmonic. F of z is analytic, it implies v is harmonic. If u is harmonic, it does not imply f of z is analytic. Okay, Utkarsha has given the general answer, but still let me ask the next question. If f of z, if v is harmonic, does it imply f of z is analytic? If v is harmonic, does it imply f of z is analytic? No. Okay. अब इस बात का आंसर उत्कर्षा ने पहले से दिया है. u and v both should be harmonic. Okay. और अगर u और v दोनों हार्मोनिक है, तो u और v का हम रिलेशन, अभी हम f of z और u का रिलेशन देखा, f of z और v का रिलेशन देखा. अब u और v दोनों हार्मोनिक है, and they are both real and imaginary part of the same analytic function. Okay, same function, तो वो function analytic है, बराबर. तो उन दोनों को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स बोलते हैं. We give them a name that
they are called as harmonic conjugates. So U is said to be the harmonic conjugate of V if U and V are harmonic and they are real and imaginary part of the same analytic function. अब समझ में आया हार्मोनिक कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब समझा? Okay, it comes from Utkarsha's answer. If U and V both are harmonic, then we can say f of z is analytic. Okay, तो ये if U and V both are harmonic, then उनको एक नाम दिया है हमने कि they are harmonic conjugates. Okay, alright. इसमें जो दो वर्ड है हार्मोनिक और कॉन्जुगेट, तो इन दोनों का मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन्स बोथ U and V both are harmonic, and conjugate means U and V belong to the same function. ऐसा नहीं है कि U is coming from f of z and V is coming from g of z. Then we cannot say they are harmonic conjugates. U and V both should be real and imaginary part of the same analytic function. Then we say they are harmonic conjugates. Did we understand this now? Harmonic conjugate का मतलब? Okay. Now this particular concept, the initial concept जो है ये थोड़ा tricky है. Okay. So that's why we have taken time to understand it. So you all revise it today, and then if you have any doubt again you can ask. Okay, all right, let's move on to the next part, and that is problem type 3. Now type 3 problem jo hai, it is based on harmonic function and analytic function both. Type 1 was based completely on analytic function. Type 2 was based completely on analytic function. Type 3 is based on both analytic and harmonic function. ठीक है? So let us see what this type is. Type 3 में we would be given a function real part u. एक function दिया होगा which would be the real part of a complex function. या फिर हमें v दिया होगा which is the imaginary part of a complex function. तो या तो real part या तो imaginary part, दोनों में से कोई एक function दिया होगा. ओके, और हमें क्या करना है? We have to find the harmonic conjugate. इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें क्वेश्चन में रियल पार्ट u दिया है तो टू फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब वी हैव टू फाइंड v. ओके, इन केस इफ क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट v दिया है, टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब वी हैव टू फाइंड u. समझा? u दिया है तो v फाइंड आउट करना है, v दिया है तो u फाइंड आउट करना है. दैट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट. देन द सेकेंड थिंग वी कैन बी आस्क्ड इज we can be asked to find the analytic function f of z. u दिया है, f of z find out करने बोलेंगे, या फिर v दिया है, f of z find out करने बोलेंगे. Okay, this is the question. All right. So let us take one example of this. Now ये जो type है type 3, इसको solve करने के at least 5 different methods are there. But I will be taking one general method which works conveniently, easily for all the problems. Okay, let's look at the question here. Find the harmonic conjugate of v equal to log of x square plus y square plus x minus 2y and find the corresponding analytic function. Okay, तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है. हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है. What is given to us? We are given the v. v is the imaginary part, correct? तो v equals to log of x square plus y square plus x minus 2y. हमें imaginary part दिया है. We have to find the harmonic conjugate. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है. मतलब क्या फाइंड आउट करना है? u, करेक्ट. एंड
एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ जेड, एक्सेलेंट। तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक है u और दूसरा है f of z. Okay, good. Now that we are clear with this, so the first thing we will do is we will find the harmonic conjugate u. Okay, ये वाला जो solution है थोड़ा tricky है. Understand this very nicely. If there is any doubt you all are having, please stop me in between and ask. Okay, so we have to find the harmonic conjugate u. U फाइंड आउट करना है और हमारे पास हाथ में रॉ मटेरियल क्या है? V दिया है हमारे पास. ओके, तो अब अगर हमारे पास V दिया है तो V को लेकर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स. ऑलराइट, सो व्हाट वी डू, वी टेक दिस V एंड वी डिफरेंशिएट इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव Vx क्या होगा? log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो log का डेरिवेटिव है 1 अपॉन, सो log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2y. यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है, so the derivative is 0. So this is the partial derivative of v with respect to x. We'll write it properly. We get vx equal to 2x upon x square plus y square plus 1. Okay, we are given only v. तो to start with हमने partial derivative से start किया है. Next we find the partial derivative of v with respect to y. तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन है, सो log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y विच इज 2y प्लस यहाँ पर कोई y का टर्म नहीं है तो डेरिवेटिव इज 0 माइनस 2 into derivative of y is 1. We'll write it properly. So this gives us partial derivative of v with respect to y is 2y upon x square plus y square minus 2. So we got vx, we got vy. vx और vy को यूज करके हमें u फाइंड आउट करना है. ओके, अब ux और uy होता तो हम फिर भी उसमें से u फाइंड आउट करने की सोच सकते थे. vx और vy यूज करके हम u कैसे फाइंड आउट करें? करेक्ट नो? vx और vy का u के साथ क्या रिलेशन है? u का रिलेशन किसके साथ है? ux और uy के साथ. तो इसलिए यहां पर हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ux एंड uy यूजिंग vx एंड vy. हाउ इज दैट? यूजिंग कॉशी-रीमान इक्वेशन. देखो अपना फंक्शन एनालिटिक है. वेरी गुड धीरज. कॉशी-रीमान इक्वेशन क्या बोलता है? ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx. ओके, तो अब हमें पहले चाहिए ux. तो वी लुक एट दिस इक्वेशन ux इक्वल टू vy. ये रहा हमारा vy. इसमें हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिलता है ux इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2. तो वी गॉट ux. नेक्स्ट हमें चाहिए uy. उसके लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे uy इक्वल टू माइनस vx. इसमें हम vx सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी गेट uy इक्वल टू माइनस ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. So we get uy equal to minus 2x upon x square plus y square minus 1. So we have ux with us, we have uy with us. Okay. अब ये ux और uy को यूज करके हमें u find out करना है. How do we do that? So for this we use a formula which we studied in semester 1 partial differentiation chapter. Okay. It is called as total derivative का formula. Now u is a function of x and y. So the differential of u du will be equal to ux dx plus uy dy. Formula याद है? du equals to ux dx plus uy dy. अब हमें ux और uy दोनों हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया है. We substitute that.
So we get du equal to this, we have substituted ux here. So 2y upon x square plus y square minus 2 into dx, plus here we substituted uy, that is minus 2x upon x square plus y square minus 1 dy. Okay, so this is du. तो let me just trace our journey. क्वेश्चन में हमारे पास v दिया था, v यूज करके हमने vx और vy फाइंड आउट किया, फिर हमने कॉशी-रीमान इक्वेशन यूज करके उसमें से ux और uy फाइंड आउट किया, ux और uy यूज करके हमने du फाइंड आउट किया. अब हमें du यूज करके u फाइंड आउट करना है. कैसे? दिस इज डिफरेंशियल ऑफ u, सो वील हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन. तो u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ du. बट ये जो du है इसमें dx भी है dy भी है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है आपको एक स्पेशल तरीके से करना है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट दैट इज. नाउ हाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन. ये अपना du है, करेक्ट. इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, जो dx वाला टर्म, ये पूरा का पूरा आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो द फर्स्ट थिंग वी रोट हियर इज इंटीग्रल ऑफ 2y upon x square plus y square minus 2 with respect to x. Once integration with respect to x is over, when you come to the next term, इसमें से हमें x के terms नहीं चाहिए. So whatever term contains x, delete that. उसको ignore करो, delete कर दो. जो बचता है उसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू y. सो यहाँ पर x वाला टर्म ये है, इसमें देखो x है, इसको डिलीट कर दिया. यहाँ पर क्या बचा? -1 बचा. सो वी आर इंटीग्रेटिंग -1 विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, सो लेट मी रिपीट दिस इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगेन. व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग समथिंग विच हैज 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, यू हैव टू इंटीग्रेट इन द फॉलोइंग मैनर. देखो ये du में dx भी है और dy भी है. So if you are integrating du, ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, प्लस नाउ यहाँ पहुंचते पहुंचते हमारा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया है. अब हमें x वाले टर्म्स नहीं चाहिए, तो ये सेकेंड वाले पार्ट में जो भी x वाले टर्म्स है उसको डिलीट करके जो बचता है उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, ऑल राइट. So this is the statement we had got. Now let's perform this integration. तो यहाँ पर u equal to, now if you see we are integrating this with respect to x. So 2y is a constant, इसको बाहर ले लिया. We get integral of 1 upon x square plus y square dx. We have separated it. Minus यहाँ पर ये 2 constant है तो ये भी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. Into इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा with respect to x. This -1 has come out, got multiplied with plus, so we got minus integral of 1 dy. Okay, now here to perform the integration we have to use the standard formula, integral of 1 upon x square plus y square with respect to x. We have to use this formula, integral of 1 upon x square plus a square with respect to x is 1 upon a into tan inverse of x by a plus c. अब यहाँ पर a की जगह पर y है, प्लस सी नहीं डालेंगे. यहाँ पर ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हम लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर ईच इंटीग्रल. ओके, सो दिस विल बी 2y हियर. इसका इंटीग्रल क्या हुआ? 1 अपॉन y, यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 अपॉन y tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y minus 2 into integral of 1 is x minus integral of 1 is y plus c. Now this c is the combination of constant of integration for this integral and this integral. Okay, अब इसको simplify करना है. यहाँ देखो this y and this y gets cancelled, so we get u equal to 2 tan inverse of x upon y minus 2x minus y plus c. So we have got u, which is the harmonic conjugate of this given function v. समझ में आया u कैसे मिला? It's a lengthy process, multiple steps are involved, but then check if we have understood the procedure. I repeat it again. Question में हमें दिया था v. v को यूज करके हमने vx और vy फाइंड आउट किया. That was the first thing. Second thing,
Vx और Vy यूज करके, कॉशी रीमन इक्वेशंस यूज करके हमने Ux और Uy फाइंड आउट किया. नेक्स्ट स्टेप, Ux और Uy एंड टोटल डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करके हमने du फाइंड आउट किया. नेक्स्ट स्टेप, du को इंटीग्रेट किया. नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं, द स्पेशल इंटीग्रेशन. ओके, वी हैव सीन व्हाट द स्पेशल इंटीग्रेशन इज. सो du को स्पेशल इंटीग्रेशन करके हमें u मिला. दैट इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? Okay, good. Now we have answered the first part. We have found out the harmonic conjugate. अब इसमें एक second part है, and that is find the corresponding analytic function. This is very easy. We have to find f of z. f of z क्या है? u plus iv. यहाँ पर v जो था वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था. अभी फर्स्ट पार्ट में हमने u फाइंड आउट किया है, तो we substitute that u and v here. So we get f of z equal to 2 tan inverse of x by y minus 2x minus y plus c plus I times v is substituted log of x square plus y square plus x minus 2y. Okay. Now when we say f of z, function of z, it has to be in terms of z. ये वाला तो in terms of x and y है. This is also correct, but then to be very proper, when we say f of z, it would be very nice if we can have this function in terms of z. Correct, no? Wouldn't it be nice if we can have this function in terms of z? Yes or no? Yes. Okay. Now the question is how to get this in terms of z. This f of z, very good Dheeraj, Milne-Thomson's rule. Can someone tell me what does Milne-Thomson rule says? What is it that we are supposed to do? Very good Jeet, Aditi. Put x equal to z and y equal to 0. Excellent. So by Milne-Thomson's rule, we put x equal to z and y equal to 0. So we get f of z equal to 2 into tan inverse of z by 0 minus 2z minus 0 plus c plus I times log of z square plus 0 square plus z minus 2 into 0. क्या किया है यहाँ पर? जहाँ जहाँ x दिखा we have replaced it by z. जहाँ जहाँ y दिखा we have replaced it by 0. अब इसको simplify करते हैं. Z upon 0 is infinity. So we get 2 tan inverse of infinity minus 2z plus c plus I times log of z square plus z. Now what is tan inverse of infinity? Tan inverse of infinity. Pi by 2. Very good, Jeet. So, yes, Ankit. Shubham, Abhinav, Amit, pi by 2. Anupam, yes. So, this gives us f of z equal to 2 into pi by 2 minus 2z plus c plus I times log of z square plus z. यहाँ पर ये z और ये z cancel हो जाएगा. So, we get the final answer as f of z equal to pi minus 2z plus c plus I times log of z square plus z. So, this is the corresponding analytic function. Did we understand this? My voice is breaking. Are you able to hear me? Yes. Okay. Check if we have got the answer here. समझ में आया है ये f of z कैसे find out किया? Did we understand how we found f of z? Okay.
So this is type 3 problem. We have seen one problem today. Next problem we'll see in the next class. Okay. So this whatever we have done till now, that I will be uploading on Google Classroom. Please go through this, understand the procedure very well. Okay. So it would be useful for the next problem that we will be solving in the next lecture. So to understand the concepts. Okay. Okay. Anyone has any questions here? You can ask. Else we wind up.